CRC polynomial numerical question which asked in the examination. So this is the question which asked in the GATE CSC 2007, and there is another question that we are going to see here. So we are going to learn from the basic and how we can solve this question. Okay. So in the question, let's suppose this is again a question. So suppose this is the data that you want to send, and here we need to use the CRC method, and there is a polynomial function which is given to us x raised to power 4 plus x plus 1. Okay, this is the data that we want to send. Now there is a polynomial function which you need to decode. Okay, so let's, for example, it is given here x square plus 1. Let's suppose this is the function. So how we can write 1 raised to x raised to power square plus 0 into x raised to power 0 plus 1 into x raised to power 1. So we can imaginary we can add 1 here. So it will become 1 and it will become 0. It will become 1. So because 1 multiplied by x raised to power 0. So this is what 1, and 1 into 1 it will become 1. So let's suppose if examiner give you x cube plus 1. So how we can write this? We can write 1 into x raised to power cube, 0 into x square, 0 into x raised to power 1, 1 into x square. So we can write this 1 0 0 1. So let's suppose the examiner give you x cube plus 1. So we can write this in the form of 1 1 0 0 0 1, and here examiner give you x raised to power 4 plus x plus 1. This is the function. So we can write this 1 into x raised to power 4, 0 into x raised to power cube, 0 into x raised to power square plus 1 into x. Why 1? Because this is given here, and then 1 into x raised to 0 power. So we can write this 1, and this we can 0, this 0, this 1 1. This is the this is the, we can say, number we get when we expand this our polynomial function. So when we encode this, this is the value that we got, the same value we have got it. Now how many bits are there? 5 bits are there. How many bits are there? 5 bits are there. So L minus 1. So we can say the length minus 1. So 5 minus 1 is equal to 4. So 4, the number that 0 we are going to append in the starting. So 4 0 we are going to append. Let's solve this question. ठीक है, ये जो question इसको solve करते हैं यहाँ पे. ठीक है, so I will remove this here. So what I have solved here, so that we can solve it from the basic. ठीक है, इसको हम एकदम scratch से start करते हैं. So you can take this reference also on your LHS, or we are going to solve this. Okay. So here we are having 1 0 0 1 1, and we are going to write our function 1 1 0 1 0, and we have 1 1 0 1 1, and the number of 0 1 2 3 4 5. So L minus 1, length minus 1 is equal to 4. So what is the value of here? 5. इसकी लेंथ कितनी? 5 5. So 4 0 we are going to append 1 2 3 4 4 0 we have appended. So one time. So here we are having the truth table of XOR. XOR की जो रहेगी ट्रूथ टेबल, वो आपको याद करनी पड़ेगी. जब आपका इनपुट 0 0 रहेगा तो आउटपुट रहेगा क्या? 0. इनपुट आपका 0 1 है, आउटपुट 1. इनपुट आपका 0 1, आउटपुट इज इक्वल टू 1, एंड इनपुट इज 1 1, आउटपुट इज 0. इट मींस सेम इनपुट रहेगा तो 0 रहेगा, डिफरेंट इनपुट रहेगा तो 1 रहेगा. ठीक है, so it means when we are in same value. So let's write it one time. So I will zoom here so that you can also see it clearly. Okay, so one time. So 1 0 0 1 1. Okay, input is same 1 1, input is same, it will become 0 1 0, input is different 1, input is same 0 0 0, input is same 1 1, it will become 0, input is different, so 0 1 will become 1. So this is the value I got. So 0 is here, so 0 has no value. I am going to discard. Now I will borrow 1 from here. Because how many bits are there? 5 bits, so 5 bit I need. 1 0 0 1 1. This I need to. 1 1 same input 0 0 0 same input 0 0 0 same input 0 1 1 same input 0 0 1 1 same input 0. So 0 0 0 has no meaning. अगर मैं कहता हूँ if you have 20 rupees, if you say that I am having 0 0 0 0 20 rupees, so both are same. So 0 has no meaning in front of this. So 0 I'm going to discard, 0 discard, 0 discard, 0 discard, 0. So I am going to borrow number. Now अब मैं क्या करूँ यहाँ पे number borrow करूँगा. So 1 I am going to borrow from here, then 0 I am going to borrow from here, 1 1 I am going to borrow from here. तो यहाँ पे कितने बिट है? 5. सो अगेन 1 0 आई नीड टू बोरो फ्रॉम हियर. तो 1 0 निकाली. अब इसको हम करते हैं वन टाइम अगेन. ठीक है, तो 1 0 0 1 1 वी गॉट हियर. नाउ लेट्स, इनपुट इज सेम, इनपुट आपका क्या सेम है? सो 0, इनपुट इज सेम 0, इनपुट इज डिफरेंट 1, इनपुट इज सेम 0, इनपुट इज डिफरेंट 1.
So now 0 discarded है, 0 discarded है. So 1 0 we have already accrued, and now we are going to take 2 0 from here. 2 0 का हम यू ले लेते हैं, यहाँ पे 2 0 आ गए मेरे पास में. ठीक है, ये 2 0 मेरे यूज में आ गए, ये 0 यूज में आ गया, ये 0 और यूज में आ गया, ये 0 यूज में. नाउ वन टाइम 1 0 0 1 1. Let's solve this. Okay, so what we got here, we got here 1 1 का 0 0 0 input 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1. This is the value which I got here. ठीक है, ये आपका सेम है तो 0 सेम है, 0 डिफरेंट है, 1 सेम है, डिफरेंट डिफरेंट 1 1. सो 1 0 इज ऑलरेडी है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑल्सो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या, 0 डिस्कार्ड होगी, ये 0 डिस्कार्ड, व्हाट वी गेट 1 0 0 1 1 0. So 3 टाइम 1 1 1 1 0. Now I don't have anything left here. यहाँ पे कुछ भी मेरे पास नहीं बचा. So this is my final reminder. This is my final reminder. जो मेरे पास रिमाइंडर बना ये वाला देखो, 3 टाइम 1 0 3 टाइम 1 0. This is my final reminder. This reminder I am going to append in my data. So the data I want to send. This is the resulting bit stream. So here the data which I want to send. So इसमें मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर को ऐड करूँगा. So what is the data that I am going to send here? In the end, the data that I'm going to send here, it will be the input plus the CRC. So the CRC bit 110. So the data plus CRC. This will become your actual message. ये क्या बनेगा, आपका actual message बनेगा. ठीक है, सो CRC को आप क्या करोगे, यहाँ पे अपेंड कर दोगे इन द डेटा. ये जो डेटा था आपका, ये वाला डेटा, इसमें आप अपेंड करोगे, ये वाला डेटा में आप इसको अपेंड करोगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. ठीक है, एक बार और एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स सपोज दिस इज द डेटा, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, so this question asked in the GATE CSC 2007. So this is the message that you want to send. ये मैसेज है, आप इसको सेंड करना चाहते हैं. And the CRC polynomial is x cube plus 1. Now what is the data, what is the original message that you are going to send here? So few options are given to you. Let's expand this. इसको जब वो expand करोगे तो x raised to पावर क्यूब 1 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है, 0 x भी नहीं है, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0. सो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 1. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, सो आई विल रिमूव दिस एंड आई विल सॉल्व इट अगेन. तो इसको अपन फिर से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. Let's solve this question again. So 1 1 0 0 1 1 0 0, and we got 1 0 0 1 1 0 0 1. We got here. Okay. And now what is the length here? Length is the 4. Length कितनी 4 है? So 1 0 0. Length कितनी 4 है? So it means 3 0 I am going to append here. How many 0? 3 0 I am going to append here. 3 0. हमने ऐसे सीखा था, L minus 1 देखा था. So 4 minus 1 कितना होना है? So let's solve this one time. 1 0 0 1. Same input है 0. Different input, same input. 1 0. Different input 1. Again I need to borrow 1 here. 1 एक बार आ गया, एक और बार कर लेते हैं इसको. तो क्या बन गया, ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको इनटू डिस्कार्ड. 1 0 0 1. ओके, तो अगेन सेम इनपुट है 0, सेम इनपुट है 0, डिफरेंट इनपुट है 1, डिफरेंट सेम है 0. तो 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 0 ये 0, तो 2 0 डिस्कार्ड करते हैं, तो 2 0 यहाँ से अपन उठा लेते हैं, ये 2 0 को उठा लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं 0 0. ठीक है, सो आई विल बिकम 1000 है. सो अगेन वन टाइम 1 0 0 1. अगेन सेम, एक्सॉर में क्या है, सेम है तो 0, सेम है 0, सेम है 0, डिफरेंट है 1. नाउ आई एम गोइंग टू बोरो 1 हेयर. एक 1 ले लिया, तो ये जो मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं है. सो नाउ आई हैव ओनली 2 बिट है, 2 मोर बिट, सो आई नीड टू बोरो 0 अगेन. तो ये 2 0 है, इनको मैं बोरो कर लेता हूँ यहाँ से, और इनको मैं यहाँ लगा देता हूँ. ठीक है, वन टाइम करेंगे फिर से.
तो 1 0 0 1 ये करेंगे। सो 1 1 0 1 0 डिफरेंट है, 0 0 सेम है, 0 1 0 डिफरेंट है। नाउ व्हाट आई लेफ्ट विथ 1 0, सो 1 0 मेरा यहाँ आ जाएगा। So now this zero has no value, so I'm going to discard this. इस zero को मैं क्या करूँ, discard करूँ। Again one more time here, 1 0 0 1 1 0 0 1 I got here. So again this 1 1 is 0, this 0 0 1 1 1 and this 1 here. So this 0 has no value here. So now how many zeros I have appended? 3 0. So this 3 0 are going to replace with this 3. तो जो मेरा डेटा बनेगा, the message that I want to send, it is my data plus this number. तो जो मेरा एक्चुअल नंबर था, इसके आगे मैं क्या ऐड करूंगा, जो मेरे यहाँ पे रिमाइंडर बना है, द रिमाइंडर विच आई गॉट हियर दैट आई एम गोइंग टू ऐड हियर। जो मेरा रिमाइंडर बना है, रिमाइंडर मेरा क्या था, 0 1 1। Why I discard only 1 0? Because I have added 3 0, so I need to replace this with someone, so I am going to replace this with 0 1 1। ये जो मेरा था नंबर, इसके आगे मैं क्या ऐड कर दूंगा, 0 1 1। This is the message that I am going to send, the data plus my remainder of the CRC, रिमाइंडर ऑफ CRC, जो मेरा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक था उसका रिमाइंडर। तो ये वैल्यू देख लो कहाँ पे है, 1 0 0 1। देखो ये वैल्यू यहाँ पे सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ठीक है। इसके आगे वैल्यू ये डिफरेंट है, कोई मतलब नहीं, डिफरेंट है। अब यहाँ पे आखिरी में क्या है, 0 1 1। 0 1 1 है, नहीं है, 0 1 1 है, नहीं है, 0 1 1 है, yes। So this is my C answer of this question is truth. So like this you can solve the question. Okay, now I believe you have understood the concept of CRC, and I believe now you are not going to make any mistake in the examination.